I'll introduce the patient first. She is Pinky. She's come from Rewari, from Rewari. 1 month back, she came in a real fetal condition. She was operated for Caesarian section outside in Rewari. And when she came, she was pouring from all sides, from the operation side and vaginally, and she was in almost unconscious state, and her hemoglobin was less than 5, and she was in a real bad state. When she was admitted in Artemis Hospital ICU, and she had developed jaundice. So because of jaundice, all her coagulation profile was deranged, and she was, obviously the bleeding was continuing because of the coagulopathy. So she was admitted under Dr. Amit, a hematologist, and Dr. Reshma Basu, ICU consultant. So when her bleeding was not stopped, then they informed me to have a gynae referral. So when I checked her, her vitals were obviously not stable, and vaginally big clots were passed. And in the operation scar, she had a transverse lower abdominal scar. There was a hematoma, big hematoma, and her coagulation profile was not good, so we could not take her up for the surgery that day. We were waiting for her coagulation profile to be a little better, and she was given all the conservative management with transfusion of blood. In the meantime, we took general surgeon's opinion as well to see the hematoma. Then next day, when her bleeding was not proper, we had taken the consent from the attendant and her husband and family, and that we have to open her up and see what is the condition inside, because she is deteriorating. Her hemoglobin was going down up to 4 in spite of giving so many blood transfusions. So we had to take a chance. In that situation, to operate also is not good, was not safe for her, and operate was not really safe for her. But we had to, take a decision to at least give a trial and save her. Then we took the consent from the family. We opened her up. When we opened, there was at least 1 liter blood inside the abdomen. After that, what we saw was that the Caesarian wound inside was gaped. The wound was totally open, and we had to do. And while going in, there was obviously the big hematoma in the abdominal wall. And while we needed to do the Caesarian hysterectomy, we removed the uterus, and we tried to attain the hemostasis. We could attain hemostasis at that moment. We kept a drain and came out. And we hoped that she will recover, because it was really a difficult surgery and she was in really bad state. Or we thought at one point maybe she will not survive. But after the surgery also, she kept bleeding. Bleeding has reduced, but she kept bleeding for some more time. Then we gave her an injection called Novo 7, that is factor 7 injection, to help her coagulopathy. After that, after the surgery and the injection, she had really recovered fast. Her hemoglobin had come up, and after blood transfusion for a certain days, she had recovered so well we could discharge her after a few days. So now she is sitting in front of me, hale and hearty, and we are really happy from the Artemis team that we could give rebirth to a patient, very young patient, and her baby is also fine. Now she is enjoying the baby at home. Now we can talk to her personal experience and her attendant right now. 25 जून को मुझे थोड़ा सा दर्द सा महसूस हो रहा था, तो हम जिस गायनी से कंसल्ट कर रहे थे उस गायनी के वहाँ पर गए, तो उन्होंने वहाँ पर जाते ही मुझे ये चीज़ बताई, जबकि मुझे इतना दर्द से हो नहीं रहा था,
लेकिन उन्होंने जाते ही मुझे कहा कि आपके जो टाँके थे, क्योंकि फर्स्ट बेबी मेरा सिजेरियन हुआ था, ये सेकंड बेबी था, तो उन्होंने कहा कि आपके जितने भी जो सिजेरियन किया था वो टाँके सारे खुल चुके हैं और आपके बच्चे ने भी पोटी कर दी है पेट के अंदर, तो आपका सिजेरियन करना पड़ेगा। मेरे जाते ही क्योंकि डिसीजन ले लिया गया था, लेकिन मुझे इतना दर्द महसूस हो नहीं रहा था, पर जब उन्होंने कह दिया कि आपका सिजेरियन होगा तो फिर मुझे तो करवाना ही था। तो बाहर उन्होंने मेरे अटेंडेंस को बता दिया कि मेरा सिजेरियन होगा और आधे एक घंटे में मेरा सिजेरियन हो गया। उसके बाद मुझे नॉर्मल वार्ड में भेज दिया गया। वहाँ पर 2 दिन में बिल्कुल ठीक रही। 28 को वहाँ पर मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपकी थोड़ा सा जॉन्डिस का लग रहा है, तो इस चीज़ को टेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो भी हुआ मुझे कुछ नहीं याद है। उसके बाद मुझे पता भी नहीं है कि मैं कब यहाँ पर आई। हमने जैसे जॉन्डिस टेस्ट करवाया तो ये कोमा में जा चुकी थी। हमने जैसे डॉक्टर ने इससे बोला कि अपनी जीभ दिखाओ, तो ये जीभ बोल ही नहीं रही थी कुछ भी। डॉक्टर बोले कि हमें लग रहा है कोमा में गई, तो इसने अपनी ये जो कैनुला वगैरह थी खींचनी शुरू कर दी। डॉक्टर बोले कि इसको आप बाहर ले जाओ। हम तुरंत गाड़ी करके आर्टेमिस में लेके आए इसको। इमरजेंसी वार्ड में सारे टेस्ट वगैरह हुए, MRI वगैरह हुई, फिर ICU में लेके गए। 3 दिन तक ये कोमा में रही। डॉक्टर अमित, डॉक्टर रेशमा वासु चेक करते रहे, लेकिन इसका जॉन्डिस तो ठीक हो गया और ये सही भी होगी, लेकिन इसको ब्लीडिंग चालू होगी। फिर मैडम गीता से उन्होंने रेफर कर दिया उनके पास। तो मैडम गीता ने इनको देखा 2-3 दिन, लेकिन आराम नहीं हुआ। बहुत ब्लड दिया, 60 यूनिट ब्लड देते गए और निकलता गया वो। लेकिन मैडम बोले कि अंदर से चेक करना पड़ेगा, सिजेरियन दोबारा से करनी पड़ेगी सर्जरी। हमने बोला करो, ठीक है, अभी हमारे पेशेंट की जान बचे, क्योंकि हमने उम्मीद खो दी थी बिल्कुल कि हमारा पेशेंट इतना वो हो गया है, पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन मैडम ने हमें कहा कि भी आप विश्वास रखो। हमने बोला मैडम आप करो सर्जरी। मैडम ने सर्जरी करी है, तो हमें दिखाया मैडम ने यूट्रस निकाला जब पूरा खुला पड़ा था और 1 लीटर के करीब वो ब्लड निकाला मैडम ने। वो भी दिखाया हमें मैडम ने कि भी ये देखो वहाँ पे डॉक्टरों ने क्या करा आपके साथ। तो उसके बाद सर्जरी के बाद भी ब्लीडिंग रही इसको। फिर मैडम ने इंजेक्शन लगाया लाइफ सेवर का। उसके बाद रिकवरी होती। उसके बाद से बिल्कुल ठीक है। मैडम तो हमारे लिए भगवान है। मैडम ने बचाया इसको, नहीं तो छोटा बेबी था, उसको भी मदर की जरूरत थी। हमने तो बिल्कुल ही उम्मीद खो दी थी, लेकिन मैडम ने हमारे लिए भगवान बन के सारी सुविधा थी, इसलिए हमें ज्यादा वो नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुई कोई भी। बहुत अच्छी टीम थी यहाँ की, सब कुछ बहुत अच्छा हमारे साथ, मतलब अच्छा हमारे लिए तो भगवान है यहाँ के डॉक्टर। हॉस्पिटल में अगर सुविधा ना हो फिर पेशेंट को हेल्प करना मुश्किल होता है। तो आर्टेमिस हॉस्पिटल में क्योंकि ब्लड बैंक है, सारे टीम मौजूद रहता है, तो ये टीम वर्क होता है ना। सब मिलके देखना पड़ता है सीरियस मरीजों को, तब जाके ठीक होता है। आर्टेमिस हॉस्पिटल का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।